All right, everyone. Welcome to another episode of Mind Over Matter with me, Fahad. And I've brought another very insightful and useful episode for each and every one of you, especially people who are a little bit into fitness, but haven't dived in completely and haven't found out the actual benefits that are there for them. There is going to be a lot of information that will eventually make up your mind to include some physical activities into your routines. So we have Muiz Imran, and he is a fitness coach. And his so basically how I came across this gentleman is through his interesting reels that he posts on Instagram, which are very inspirational, and they are actually pretty damn good. That I'll tell you. So nothing less than any international fitness influencers video packages and stuff. So hello, Muiz. How are you doing today? Assalamu alaikum. कैसे हैं Fahad bhai? I'm Well, good. So, as Fahad bhai introduced, I'm basically working as an online fitness coach. Mainly as an online fitness coach. I also train the employees at the Unilever gym. So, I'm basically heading the gym there. Matt, I'll introduce the topics that we'll be discussing today. We'll start off with the, you know, lifestyle factors. So what are the lifestyle factors that should be there in order for you to, what changes you need to be making into your schedule so that you can, in fact, dive in and become a better version of yourself? Then we'll move on towards mind body connection a little bit. What is the connection between mind and body? And then we'll talk a little bit about the supplementation and enhancing overall health. So let's start off with the basics, Moise. So why do you think fitness is important in a person's life in today's time? Uh, so, I'll start off by basically telling you how I got into fitness. Yeah. So, I'm basically 24 years right now. 24 years old right now. I started going to the gym when I was about 15 years old. उसी वक्त मैंने probably अपना O levels खत्म किया था और फिर मैंने Yeah. like I started off as a chubby kid. तो उस वक्त से मतलब body dysmorphia और इस तरह की Yeah. चीजें ज्यादा उस तरह की टाइम पे बहुत कॉमन होती है because you're also in school. आप दूसरे लोगों के साथ interact कर रहे होते हो और it does hit you. Oh, it's tough. खैर that Me, I हाँ can I can attest that how. So I was on the skinnier side of the अच्छा things. used to be skinny. Yes, so Yeah, that's I was a 62 kg guy on a 6 feet 2 inches height. Now you imagine that. yeah. So you're six Right feet. now You're I'm 100 kg. I'm 6'5" and I'm 100 kg at this moment. And I was 62 back in the day when I was a teenager. So it was tough. It was yeah. tough. What's your Please height? continue. I'm You're six six five. you're Yeah, 6'5". You're tall. I Yeah. know. I know. Yeah, I am. I am. You I stand out get a lot. that. Yeah. But So you were saying, yeah. so that's basically like that was one of the main factors why I started going to there was one of the most cliche reasons कि मैं मोटा होता था. I wanted some change in my life. तो सबसे पहली चीज जो एक बंदा देसी बंदा देखता है वो है कि लोग जिम जा रहे होते हैं. तो Yeah. उसी तरह मैंने भी शुरू किया था. तो वो इट वाज लाइक मोहल्ले का जिम होता है आपका. इतना ज्यादा वो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट देयर बट इट गेट्स द जॉब डन. तो Yeah. उधर से दैट्स बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड एंड इट वाज वेरी हम्बल. लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता था. और उधर एक देयर यूज्ड टू बी दिस उस्ताद कहते हैं उसको. उस्ताद होते थे वहां पे वो हम लोग को चीजें सिखा रहे होते थे एंड दैट्स मतलब शुरू हमने उस तरह किया था. And it was pretty much और bro science. Mostly यही होता है कि आपको most of the times it's bro हाँ science. उन्होंने न्यूट्रिशन वाइज तो खैर मुझे कुछ भी गाइड नहीं किया था. उनको मतलब खैर उनका न्यूट्रिशन जिस तरह वो फॉलो करते थे हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग यू कांट इवन फॉलो दैट न्यूट्रिशन प्लान बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिक लाइक द रियलिस्टिक लाइव्स दैट वी आर लिविंग आप नहीं फॉलो कर सकते वो बहुत What strict. was it like? इट्स वेरी ब्रो मील टाइप मतलब उसके अंदर चिकन राइस होता है ओट्स होते हैं बहुत चलो, at least बेसिक स्टफ. he knew. I thought he wouldn't even know the nutrition. ठीक है, चलो. At least he knew वाज अ बॉडी कि बिल्डर. हाँ क्या है. उसकी बॉडी हाँ, so ही it's a bodybuilder diet. Broccoli, rice, chicken, fish, um, so pretty much so bananas, carbs, and
a little bit fresh dry fruits and protein. Yeah, हाँ वो जो बेसिक सा होता है ना, आपको रेड बीन्स, पोटैटोज प्री वर्कआउट, और इस तरह से वो yeah, yeah. उन्होंने मुझे बना के Makes दे दिया था, sense. बट Hmm. फिर बस हम करते गए. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई यूज्ड टू वर्क आउट विद माय फ्रेंड्स देयर. आई हैड 3 ऑफ माय वर्कआउट जिम बडीज कह लो आप उनको. तो मैं अपने बॉयज के साथ वर्कआउट करते रहता था. एंड देन वी, it was 4 years we just went to the gym without knowing what we were doing. We just used to go, we used to lift a lot of weight. Yeah. Injuries भी होती थी साथ में, हम बस एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, चीजें सीखते रहते थे. Hmm. Hmm. एंड देन बेसिकली कोविड हिट. कोविड जब आया तो फिर उस वक्त तक इस वक्त तक देयर वर चेंजेस इन माय बॉडी, बट उस वक्त तक मैं मेनली बल्किंग करते रहता था. मेरा वेट उतना ही था जितना हमेशा से होता है, बट या मेरी मस्कुलर फ्रेम बढ़ती थी, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा था, बट आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन विद मी. आई Hmm. वाज जस्ट गोइंग टू द जिम, ईटिंग फूड, और मतलब इतना ज्यादा मैंने, आई वाजंट रियली फोकस्ड, मुझे पता नहीं था. बट खैर देन दैट्स व्हेन आई स्टार्ट टू गेट इनटू न्यूट्रिशन, दैट्स व्हेन आई स्टार्ट टू एक्चुअली लर्न अबाउट थिंग्स. तो वो फिर कोविड का टाइम था, उस वक्त टाइम भी आपके पास बहुत था. सो फिर मैं बिल्कुल लाइक सेल्फ स्टडी मोड में गया, एंड देन आई स्टार्ट टू एक्चुअली लाइक फाइंड आउट मोर अबाउट न्यूट्रिशन, कि हाउ एक्चुअली Hmm. न्यूट्रिशन That is when वे लाइक. you, yeah, may start हाँ making progress. हाँ, मेन चीज जो मेरा गोल हमेशा से रहा है वो है एस्थेटिक्स, लाइक तो एस्थेटिक्स इज कनेक्टेड टू योर न्यूट्रिशन. इट्स नॉट अबाउट इट इज अबाउट योर वर्कआउट्स एंड वो, बट मेन 90% समझ लो, आप कह लो कि न्यूट्रिशन है आपका, Yeah, इस तरह से. yeah. या बट या सो उसके बाद देन आई स्टार्ट टू गेट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन. आई गॉट हायर्ड एट दिस जिम इन कराची. यहाँ पे एक जिम होता है, एटमॉस्फेयर फिटनेस. Which इट्स one? इन सदर. Acha. एटमॉस्फेयर, आई डोंट नो इफ Atmosphere. Yeah, yeah. I know of it. you know of it. Yeah, it's Yeah, it's yeah, I it's do. the best equipment wise, और ये मतलब बहुत अच्छा जिम है. बट खैर उधर फिर आई यूज्ड टू बी द ट्रेनर देयर. आई यूज्ड टू बी लाइक, उन्होंने आई थिंक What is मेरे the लिए नया trainee जॉब, trainer? या उन्होंने मेरे लिए एक नया जॉब निकाल दिया था कि आप, so I wouldn't really like train people, but I would basically like, I would accompany the head trainers there. मैं उनको, I would just basically learn करने का था, जितना मैं चीजें absorb कर सक रहा था उधर मैं वो करता था. But खैर that was one of the very good experiences I've had. वो I worked there for 6 months, and that was one of the, pretty much I've probably learned most in those 6 months that I've learned. And then I Life-changing started, experience, we'd say. Hmm. हाँ मतलब आप कह लो कि उसमें मतलब मेरा लाइक, आपकी दुनिया खुल जाती है एक नई इंडस्ट्री की तरफ. So that's when I started to get And to know कि I think I know a few like, people who actually trained there or actually worked out there as well. Maybe yeah, I can if I can recall the names later on, but I think I know. So basically, what happens is a few gyms like, for example, Atmosphere, Body Station, um, platinum fitness. Platinum Gym, yeah. So ये चार पांच फिर अभी TriFit आ गया. So what Traffic. happens is good trainers they keep on shuffling and ये इन्हीं चार पांच पे gyms में चल, काम करते रहते हैं, rotation पे रहता है. Yeah, yeah, yeah. So I think I that's know a few people who have worked there as well. So the good thing yeah, is these 4 5 guys, these 4 5 people are actually pretty damn good. That's why they're working on the elite level of gyms. They know their yeah, they stuff. are, yeah, they're well educated, मतलब उनको वो science हाँ, type that is the difference. पहले क्या होता था कि पहले ब्रो साइंस पे ही चलता था, बस अगर if you know how to down the angles and everything, then you would become a trainer. अब you need certifications, you need the सारी चीजें, you have to interview होता है proper, you show your certifications and they ask you questions. So ये सारी चीजें स्क्रीन हो गई हैं अब, अच्छा हो गया now सारा कुछ. need some sort of background. अगर if you want to get a Yes, job in fit, तो आपको either you need an online certification or you yes, need yes, sort of like credibility, तो आपको जरूरी हो गया, yeah. which is very good, because that's the problem here ना. मतलब if you go to a gym, like if you go to a normal, मतलब समझो आप घर के पास अपने जा रहे हो कोई जिम में, तो वहां पे आपको मिलेगा एक उस्ताद जो आपको चीजें बताएगा, Yeah. लेकिन वो उस लेवल की चीजें होंगी जिससे either you're gonna end up getting seriously injured in like 6 months, or you won't enjoy your experience And there. those won't be personalized at the same time. It will be a one fit for all. सबको एक It's ही ट्रेनिंग, एक ही न्यूट्रिशन, सबको वही फॉलो करना है. भाई मुझे नहीं सूट कर रहा, वो मुझे कह रहा है it, स्क्वाट्स लगाओ, भाई मैं नहीं कर सकता एट 6'5". आई कैन नॉट डू हैवी स्क्वाट्स.
मुझे इंजरी हो सकती है, मेरे साथ और दूसरे मसले हैं, आई हैव गॉट एन एंकल इंजरी, बट दे डोंट, दे से नहीं नहीं कुछ नहीं होता, लगाओ यार, यू विल गेट वही स्ट्रॉन्गर. ना, दैट्स द थिंग, यू हैव टू वर्क योर वे अराउंड योर इंजरीज. आपको बॉडी मैकेनिक्स को समझना है, आपको इंडिविजुअल्स को देखना है कि मतलब या हाउ इंडिविजुअल मूव्स डिफरेंटली या देन द या अदर इंडिविजुअल, या देखना बहुत जरूरी होता है. सो मेन जो एब्सोल्युटली. कल्चर फॉलो करते हैं वो बेसिकली ये होता है कि अच्छा अगर उस पे चल रहा है तो बाकी दूसरे पे भी चलेगा. तो ये तो तुमने बताया कि यार दिस वाज द बैकग्राउंड हाउ यू स्टार्टेड ऑफ. तो या व्हाट चेंजेस occurred in your life after you started becoming a fitter version of yourself? What happened? क्या अचीव किया तुमने? यार तो अब बेसिकली ना, जब आप यू हैव टू मतलब अगर आप फिटनेस को देखो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू द जिम, इट्स अबाउट चेंजिंग योर होल, मतलब इट्स अबाउट एक कह लो कि एक वे ऑफ लिविंग हो जाता है फिर आपके लिए ना एक पॉइंट पे Yes. आके. 'Cause अब यू हैव टू लुक एट इट 360. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जिम गए और सब सही हो जाएगा. Because you're going to go to the gym, but you're going to have to look after your mental health. You're going to have to look after your physical health, Absolutely. nutrition. उस तरह से So what you're holistically. eating, it affects you as well. You feel Exactly. differently. आपने You वो when you सुना cut होगा down कि on sugar, हाँ, then you are what you eat वाली जो चीज थियरी जो लोग कहते absolutely. हैं वो बहुत मतलब कभी कभी आप सही कहते हैं. Because if you eat dirty food, if you eat junk all the time, you're going to feel like junk You feel trashy, basically. yeah, you feel trashy all the time. But when you start cutting down and वही थोड़ा सा carbs कम करते हो, शुरू में you have sort of a system crash, जो कि मैंने भी फील किया ओवर द इयर्स कि आप एकदम से कार्ब्स कट कर दो तो यू आर लो ऑन एनर्जी एंड एवरीथिंग. बट अनफॉर्चुनेटली वो जो चीजें हो फील हो रही होती है वो भी इसीलिए कि हमने खुद अपनी डाइट खराब की हुई होती है, हमें पता ही नहीं होता कि यार कार्ब्स नहीं खाने होते इतने ज्यादा, या मॉडरेशन में चीजें करनी होती है, या ये सब, ये हाँ, मीठा ऐसा इतना नहीं है ज्यादा कि नहीं आपने खाना. सो नहीं खाने होते बट आपने एग्जैक्टली मॉडरेशन में खाना है. बट यही मसला है ना, यहाँ पे तो एक्सपोजर बहुत कम है. द थिंग इज दैट द फिटनेस सीन हियर इजंट इवन हियर येट. समझ रहे हैं आप? द व्हाट आई थिंक द फिटनेस इंडस्ट्री स्टार्टेड टू बूम समझे इन द वेस्ट 30-40 years ago. ये जब हाँ, अर्ली ये टू सब. थाउजेंड्स में आई रिमेम्बर व्हेन रॉनी वगैरह दे वर स्टिल एट देयर पीक, जे कटलर, रॉनी कोलमैन, ये सब. सो दे वर ऑलरेडी यूएस के अंदर, द फिटनेस इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी बूमिंग एंड पीपल वर लाइक हार्डकोर जिम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था. यहाँ पे या तो मतलब उस वक्त तक लोग लास्ट 10 साल fitness में में आया. आ गए थे. They knew that they had changed their way of living for it to या be sustainable. ना मतलब उनको आगे आगे तक हम्म जिंदगी नहीं है, उनको हम्म अपनी जिंदगी में फिटनेस और लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. या बट अभी आप देखें तो यहाँ पे अभी तक वो चेंज आया नहीं है. नहीं, अच्छा, बट इट it's इज about the not the change but the mentality of things. I'm sorry I cut you off. एग्जैक्टली वो ना माइंडसेट चेंज होता है, लोगों शिफ्ट लोगों इन का ज्यादा पता माइंडसेट. है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप, मैं इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं, आई माइट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, बट द मोर चैलेंज आई फेस इज फ्रॉम द पीपल, बिकॉज वो आपको मुझे मुश्किल बनाते हैं. वो कहते हैं अरे ये क्या, अरे ये खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे, वाई, वही ना ये क्या यहाँ है, अरे खाओगे तो बनेगा ना यार मसल. उनको पता ही नहीं है कि हाउ थिंग्स वर्क. उनको लग रहा है मीठा भी खाने से बॉडी बनती है, उनको लग रहा है फ्रूट जूस पीने से भी, एक दो गिलास जूस पी लो उससे जो है. सो हम्म, ये लोग मुश्किल बनाते हैं आपके लिए. इफ यू गोइंग टू जिम या एवरी डे, देखते हैं अरे रोजाना जाके क्या होगा. सो there are a lot of problems that they create for people who want to actually get in and do something, because you need some sort of थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए कि you need a little bit of craziness going on in order to achieve the kind of level that you achieve. Yeah, but see, for most people, it's not about bodybuilding. It's not like they have to go compete in a bodybuilding show. तो उनको उस लेवल पे करने की जरूरत भी नहीं है. मतलब जस्ट लुक एट इट इन अ वेरी होलिस्टिक वे. आप अगर अपनी डाइट के अंदर जस्ट गेट इन मोर प्रोटीन, ट्राई टू ईट मोर हेल्दी, जस्ट ऑयल हटा दो, आप प्रोसेस्ड चीजें हटाओ. इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस से तो आप शुरू करो. बिकॉज फिटनेस इट्स आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 8 years एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 8 years लाइक मतलब मैं 8 साल से जिम जा रहा हूँ तो जाके यू रीच अ सर्टेन लेवल. बट मोहित, एंड वो मिथ कैसे खत्म करोगे एकदम से कि लोगों को लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी? वो मिथ भी तो है कि हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है बॉडी बनेगी. देन सबसे यू बड़ी डोंट, यू नो, कि द बिगेस्ट, या उस प्रॉब्लम को, और क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम ट्रेनिंग करेंगे जाके वेट उठाएंगे इसका मतलब बॉडी बन जाएगी.
So the objective हम्म, is always wrong. They are not going there. They are only going to the gym because they think कि अब हमें body बनानी है. But they are not going because they are like कि हम यार कार्डियो करें, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हमारी अच्छी होगी, हमारा हार्ट स्ट्रांग होगा, हमारे ऑर्गन बेहतर होंगे, हम रनिंग करेंगे तो yeah, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव करेगा, बाकी वो दे डोंट अंडरस्टैंड. सो ये वाली चीज अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी लैकलस्टर है. ये यहाँ अभी भी थोड़ा सा जरूरत है इन चीजों को, आपके तरह के लोगों को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि यार जिम में जाने से बॉडी नहीं बनाते हैं आप सिर्फ, यू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ. exactly. So when you're main मसला ये आता है कि there is no certain goal orientation. मतलब जब बंदा सोच रहा है ना कि उसको फिटनेस में आना है, वो ये नहीं, वो अपने लिए कोई गोल नहीं बनाता. वो बेसिकली ये सोचते हैं कि मुझे जिम जाना है. इस तरह ये मेन मसला ये आ जाता है. आप समझे, इफ यू कीप अ सर्टेन, मतलब अगर आप गोल ओरिएंटेड अप्रोच लें, समझे, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट द जिम and I give you certain goals. I'm going to give you a goal to run 15, to start off by running for 15 minutes. That's, मतलब समझे, ये आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल है. मैं अगर आपको एक, अब आप मेरे पास सबसे पहले चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक बंदा आता है और वो मुझे कहते हैं यार 2 महीने में ना मुझे आपकी जैसी बॉडी चाहिए. दैट्स द, मतलब समझे, अगर आप जिम में है ना तो आपके पास हर एक बंदा ऑलमोस्ट आके आपसे ये सवाल तो करेगा ही कि आपकी जैसी बॉडी चाहिए एंड आई वांट टू गेट इट इन 2 मंथ्स. आपकी जैसी अब बॉडी ये चाहिए कोई या उस फलाने बंदे की जैसी बॉडी चाहिए, ऋतिक वाली बॉडी चाहिए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली बॉडी चाहिए, जे कटलर वाली नहीं, मतलब चाहिए? सब एक सामने आके पिक्चर रख देगा, या इस तरह की चीजें होती रहती हैं आपके साथ. बट उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे बंदे के जेनेटिक्स का क्या हाथ है, इसके पीछे हाउ हाउ मच ऑफ एन इफेक्ट जेनेटिक्स जेनेटिक टेक्स पोटेंशियल. प्लेस, हाउ लॉन्ग ही ट्रेनिंग फॉर. ही हैज इट समटाइम्स. पीपल जिसके आप पिक्चर्स दिखाते हो उसके पास 10-15 लोग की टीम होती है जो कि उसको उस लेवल तक पहुंचा रही होती है. बट आप इस तरह की चीजें यू हैव टू लुक, देखना पड़ता है And कि that is आप the मतलब. difference between working out, exercising, and training. One of my coaches told me very nicely, कि यार, this is the difference between exercising and coaching. I'm sorry, exercising and training. So you Yeah. are just exercising, just day in day out. You're just exercising. You're just moving around. But when you're training Yeah. yourself. So you gradually become better, and you have set goals that you achieve, and then you move to the next one. On that, I'll ask you a question real quick, Miss. But from what you said, so just tell everyone. So for those people who say कि यार आपके पास आते होंगे, बोलते होंगे यार मुइज भाई, बॉडी तो बनानी है लेकिन ये बाकी सब चीजें नहीं बने, कोई मसला नहीं यार, बाइसेप बनवा दो. तो क्या मैं बाइसेप बनाने तो मैं बाइसेप लगाऊं सारे? शुड आई डू बाइसेप थ्राइस अ वीक? या मुझे शोल्डर बनाना है तो क्या मैं हफ्ते में 3 दफा शोल्डर ज्यादा करूंगा तो ज्यादा बन जाएंगे, राइट? बाकी चीजें नहीं करूंगा तो नहीं बनेंगी. इसके बारे में बता दो यार सबको जरा थोड़ा सा. यार देखें, इस तरह नहीं है कि आप हफ्ते में 3 दफा हर दिन जिम जाएंगे और आप बाइसेप लगा देंगे तो आपका बाइसेप बन जाएगा. इस तरह नहीं होता. यू फर्स्टली तो व्हेन यू गो एंड ट्रेन अ सर्टेन मसल, उसको 48 आवर्स का रिकवरी पीरियड चाहिए. मतलब आपने आज बाइसेप लगा लिया तो आपको उस बाइसेप को वापस उसको फुली 100% हेल्थ में आने के लिए 2 दिन चाहिए होता है. तो ओनली, और ये सबसे बड़ा मसला भी ये है दैट पीपल डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट रिकवरी इज. बिकॉज आप जाके जिम जाके अपने आप को, you're breaking yourself, destroying yourself at the gym every day, हाँ. but you're not recovering from it. So then वो pointless बन जाते हैं. मतलब you're basically overtraining. जो आपने मुझे एग्जांपल बताई वो overtraining की एग्जांपल है. So if you do biceps like 3 times a week, you're overloading your bicep for no reason. वो नहीं करेगा grow. और And आपका बाइसेप अगर आपने, सॉरी, please continue. Please continue. and even if you like for some reason go train your bicep 3 times a week, आपने अपना बाइसेप ग्रो भी कर लिया, वो लाइक इट्स जस्ट गोना लाइक, वो आप इवेंचुअली गेन स्ट्रेंथ नहीं कर सकोगे, उस पर प्लेटो हो जाएगा वो, बिकॉज आप हर चीज पे नहीं कर रहे हो, अच्छा, बिकॉज another question so that you can cover this completely from a 360-degree view. So if I want to build up my biceps, for example, why do why do I need to do legs? Why do I have to do legs? तो बहुत सारे लोग, तुम क्लाइंट्स कहते होंगे मोहित भाई मुझे लेग्स नहीं, लेग्स क्यों करवा रहे हो यार? लेग्स का क्या ताल्लुक है? मुझे तो बाइसेप बनाने आया हूँ, मैं तो चेस्ट बनाना है, लेग्स क्यों करूँ? यार मैं अपने क्लाइंट्स को ना सबसे पहली चीज रेकमेंड यही करता हूँ कि ब्रो तुम, यू शुड, द ओनली थिंग यू शुड ट्रेन एट द जिम इज लेग्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. ऑप्टिमल चीज यही है क्योंकि ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा.
Yes. If you're a if you're a male person, then doing legs is probably one of the most important things for you to be doing, because it's going to help you gain muscle in other parts of your life, other parts of your body basically. Yeah. And it हाँ तो strengthens your core, helps you with overall stability. एग्जैक्टली, मतलब ये सारी स्टेबलाइज चीजों में पे काम करेगा, आपकी कोर yeah. स्ट्रेंथ पे काम करेगा, ये ट्रांसलेट होती है आपके बैक पे, आपके चेस्ट पे, आप बैक बेंट ओवर रो बहुत, इफ यू वांट टू गो हैवी ऑन अ बेंट ओवर रो, इफ यू डोंट हैव हैमस्ट्रिंग ग्लूट स्टेबलाइजेशन तो आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, इसके अलावा और Moiz, we had to talk about supplementation and its benefit, but before we move on to that, uh, can you just outline a few steps of how a regular normal individual who is not into fitness can actually include fitness into his lifestyle? How do you think he can make little changes and not actually go crazy all in and change his diet, change his lifestyle altogether, and start hitting weights and so and put on start having supplementation as well? How does a normal person start? Because as we have just mentioned in the beginning, that fitness and training does not just help you build muscle, it helps you with your overall health, cardiovascular activity, it helps with your joints, it sort of gives a longer life to your body and also helps you feel better at the end of the day. Because a lot of times when how bodybuilders are made is after breakups and failures in life is what you must have heard as well. So या या why? Because you feel better. You have gone through a very bad phase of your life, but now you're working out and you feel better. You build a better self confidence because that's what you lose in the first place when you get rejected or you have a breakup or whatever. You lose your self confidence uh, in the yeah. सो मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली हाउ डज द जिम ट्रांसलेट टू योर रियल लाइफ। तो जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि इफ अ पर्सन गोज थ्रू अ ब्रेकअप या ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, तो हाउ कैन जिम बेसिकली बेनिफिट हिम। अब यू गो टू द जिम, यू गो टू द जिम एवरी डे एंड यू ट्राई टू प्रोग्रेस, ठीक है। जब आप प्रोग्रेशन करते हो ना, तो आप फेलियर्स फेस करोगे फॉर श्योर एवरी डे। ये जो when you keep on failing and then you look back and then you see that you failed, but then again when you progress, तो ये जब आप when you start to accept failure ना, ये इसकी ट्रांसलेशन आपकी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेहतर होती है जिंदगी में। तो it really disciplines you in a way, because you start to accept failure as a you आप उसको देखते हो as a thing you can progress with, मतलब कि आप फेल हुए, बट इट्स फॉर प्रोग्रेशन। आगे जाके इट्स ओके इफ यू फेल टुडे, आगे टुमारो यू आर गोना बी बेटर एट इट। तो इस तरह इट रियली डज ट्रांसलेट। उसके अलावा obviously confidence boost मिलता है when you not only like when you gain strength, but looks और strength दोनों में, if you see somebody who can, if you can lift like 100 kilos on your back through your legs, it will boost your confidence no matter what। तो इस तरह से confidence boost भी आता है। So a lot of people really lack like जो confidence जो lack करते हैं, I believe if they start going to the gym, or not only to the gym, if they start to pick up a sport, if you take boxing as an example, boxing is one sport that is going to boost your self confidence, मतलब वो आपको self esteem इतना boost करता है वो, that's one sport that really like changes you as a person। Have you tried तो it, Moise? yeah, no, I haven't tried kickboxing। I've been getting into different sports lately, मतलब मैं calisthenics की तरफ थोड़ा सा like I've been experimenting, parkour की तरफ थोड़ा सा experiment कर रहा हूँ। Interesting. But yeah, so But yeah, I think mainly you're वो at the in the same in the right age group right now to start off with these because see I yeah cannot I've been wanting to do kickboxing for a very long time. There was a new training center opened like I'm not new now. It's been probably 10 years now. K7 or K9, K7 if का you सुना must है? have heard. K7, right? So they used to do great stuff. So a lot of kids would enroll and start taking the classes, and I wanted to, but I for some reason it couldn't. But now at the age of 37, I don't want to just get on and do a sport, combat sport like that. I may not be able to cope up with it at this point. I mean, I don't know, but what I think of it is,
maybe it's not really for me. So I would rather go for a swim and get the benefits out of swimming or badminton or other sports rather than kickboxing. Unless I have like coaches and everybody who can take care of me. I mean, I don't know. Just a thought. it's your individual opinion. मतलब बिल्कुल सही है. If अगर आप अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, if you're 37 years old and you feel like your joints aren't in their proper complete health, तो you don't have to go that extreme. आपने डायरेक्ट जाके किक बॉक्सिंग नहीं शुरू कर देनी. You can start by swimming, फिर आप हल्के हल्के go for jogs, then Mhm. maybe start to get in some resistance training. उसके बाद after a month or two, once you're एक zone में भी आना पड़ता है. आप feel करेंगे, you're going to start to feel better. You're going to start to feel your joints get better. You're going to start to So what you are trying to actually. say, Moises, what you are, let me just summarize what you said. It's never too late, right? It's आप अगर आप if you look at your आप Instagram खोलें आप there एक बंदी बहुत फेमस हो रही है यहाँ पे. I think grandma or some Yeah, मतलब yeah, I've seen a she's crazy 80. stuff, bro. She's Yeah. doing some crazy stuff. हाँ मतलब आप देखो ना. You're doing It's deadlifts and whatnot. it is genetic but they're still doing it. It's वो आप समझे 86 years पे सोचना भी कि मैं सोशल मीडिया पे I'm gonna show my Hmm. gym journey. No, Mohit, I don't think it's genetics. Yeah, genetics. If you had the good genetics, you might be able to do it up till let's say 50s. After that, what? I mean, even the elite performers athletes, they don't do it after 60s. On That's camera. I mean, there are repercussions of everything, but it's. I mean, just hats off to the attitude of the lady. हाँ exactly like mindset building है ना. It's about your Yeah, yeah. mindset के it is never too late. आप कर सकते हो. So yeah, I think you should start It's kickboxing. You should pretty. think about it. Yeah, maybe chalo, I might will. So talking about starting of new things and it's never too late, that is tough. I think it was the COVID when I started trying to learn new things. For example, so I brought up some stuff because gyms were closed all over the place. So I brought Yeah. in some home equipment, some resistance bands and some dumbbells and whatnot. So I also brought a jumping rope. So I always wanted to do jump rope. Yeah. So I brought in at the age of 34, 35. I learned jump rope. So it was a new move for me and I felt good about it. It took me a while, but I got a hang of it and I was like, chalo, kuch सीखा तो सही. Usually kids learn it in the during the childhood. So मैंने कहा चलो Yeah. यार, not bad. Chalo, if I can do this, maybe I can do something else too. So maybe one See, day it's we can do some never too kickboxing late. as Yeah. well. But yeah, Absolutely. fun Just about fact to about mention it. skipping, most of the weight that I've lost is through skipping. So if Wow. anybody's looking to lose weight, skipping is one of the best options that you have. क्योंकि मेरे पास I did not have the treadmill ना, so how would I do the cardio at home? So that's how I Same did problem. my cardio. Yeah. So it's very useful, And yeah, and your skipping is heartbeat good just because goes up right away. exactly it's a form of hit training. So Yeah, you yeah, yeah. skipping really And it was helps amazing, you yeah. And how you see the progress. Case in the start you cannot even do 4, and then you do 12, and then 24, and I ended up doing 100 per session. I was yeah, like, yeah, this is too good for me. I mean, I never thought I'd be able to do 100 skips a exactly. workout. 50 in the It's beginning and 50 at the end. It was absolutely crazy. Yeah. But it's just yeah, that we have self-limiting beliefs. We just think of ourselves very little. कि हम कर नहीं सकते. But it's just all up here. That's why I called this podcast Mind Over Matter because mind is over everything. It's just all up here. exactly. It's breaking barriers. आपके जो mindset के barriers हैं, you just have to break those. Comfort zone से बाहर निकलना है. It's हर चीज you're gonna see so much growth if you start coming out of your comfort zone. Absolutely. But problem is we don't want to come out of the comfort zone is the biggest problem. We just want to um, not do anything um, what we are not doing. We just want to be in a comfort zone and do things that we do every day. Uh, that is the It's biggest called problem because it comfort is zone. difficult. Some yeah, What's yeah, that? it's yeah, main मसला ही है ना. People don't want to get the exposure बाहर जाके दुनिया को experience नहीं करना.
अपने it's about getting out of your shell. आप देखो तो सही कि बाहर की दुनिया में मतलब क्या तुमने चीजें वो सुना चल। होगा, I've read it many times that if you want to be the one of the best 5% people in the world, if you want to be, if you want to belong to that category, you have to do better than 95% people in the world. So that's how you get to that level. And if you are not willing to do that, then nobody else is gonna come up and help you out. Especially वही when it comes है to ना। your health, nobody can help you. Yeah, if you want to be the top five, you have to do those 5% things which the 95% people don't do ना। मतलब they're the top 5% for a reason. And that goes for everything in life, not just fitness. This is about everything. Any profession you will pick up. It translates to everything in life. हर चीज में आपने comfort zone से बाहर निकलना है। आपने your goal should be to learn something every single day। मतलब either learn a new skill, कुछ नया सीख लो आप। Always try to get better with where you are. Absolutely. Acha, Moiz, brings me to the last part of the session, which is about supplementation. So, first of all, before getting into it, would you tell us a little bit about who supplementation is for, and is it really necessary to supplement ourselves? And then later on, maybe you can touch upon a few basic supplementation that a person should include into their dietary regime. Yeah, for sure. So अब जैसे supplements होते हैं ना, supplements there are two types of supplements। एक होते हैं आपके dietary supplements and there the other types are the performance enhancing supplements। जिस तरह those can be categorized as steroids or PEDs, वो हो जाता है। Performance So enhancement drugs. basically, so right now we're not going to touch on that अभी, but let's talk about dietary supplements जिसके अंदर आपका प्रोटीन पाउडर आ जाता है, आपके vitamins and minerals आ जाते हैं, और क्रिएटिन वगैरह, हर्बल सप्लीमेंट्स, शिलाजीत वगैरह, PCAAs. PCAA, प्री वर्कआउट, इस तरह की चीजें। बिल्कुल सो ठीक। yeah, so I'll tell you what I use. So I basically use a pre-workout as an energy source before my workout, and then I also use protein sometimes, but it depends। I try to get most of my meals through natural diet, but protein shakes भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पे मसला ये है कि लोग यूजुअली समझते ये हैं कि प्रोटीन शेक्स अगर आप पीते हैं तो वो बहुत ही अननेचुरल है, you're putting some chemical in your body, Yes, Mr. Steroids which is, हैं। इसमें स्टेरॉइड्स हैं। मतलब प्रोटीन शेक के अंदर स्टेरॉइड्स हैं, लोग क्रिएटिन को कोई पाउडर समझते हैं, बट इस तरह नहीं होता। लाइक प्रोटीन इज जस्ट इट्स another way to consume। समझे, इज गोना गिव यू द सेम बेनिफिट एज यू ईटिंग एग वाइट्स और चिकन। लाइक इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ मैक्रोज, तो अगर आपको मैक्रोज, जो मैक्रोज आप चिकन से पूरे नहीं कर सकते हो, वो आपने थ्रू सप्लीमेंटेशन प्रोटीन से पूरे कर लिए हैं, विच इज completely fine। Like you एंड don't have to। सिमिलरली जो माइक्रोज आपके मिस हो रहे हैं डेली आपके उसमें, वो आप Exactly। अपने सप्लीमेंटेशन से पूरे कर लो। Exactly. For you to be hitting your micros every single day, there needs to be at least 8 different types of colors in your diet। Colors से मतलब हो गया कि tomatoes हो गए, cucumbers हो गए, so those are 2 colors, so you need to be 8 colors in your diet, which is very hard realistically to get in a day। So eating a vitamin supplement or eating a vitamin supplement is completely fine, because नहीं हो सकता। आप अपने सारे You need vitamins vitamin E, vitamin D, को, vitamin B3. You need all these a lot of vitamins, vitamins you yeah, cannot get from your regular diet. So yeah. taking supplementation is good, especially if you're an active person. You're gonna need Especially those. if you're an active person, because you're using so many electrolytes through sweat, so you Yeah. need to replenish those electrolytes इस तरह से। तो sir, they can be very important in terms of performance और इस तरह से। Mhm. So basically, what happens is you can basically start off with a regular person can maybe start off with a standard whey protein. If he or she wants to include any supplementation into their lifestyle, given that they are not being able to uh, consume the required amount of macros, which are like, let's say, they need like a 50 gram of protein per day in order to maintain or improve. Let's say if they want to put on muscle, they need 50 grams of protein, and they're not even able to consume it from the real food like chicken.
eggs, peanut butter, etc. So what they can do is basically they can just eat all of that stuff, and just to make sure that along with that, they, supplement it with a scoop of protein. yeah. हर बंदे का रिक्वायरमेंट होता है वो, इट्स ऑल कैलकुलेटेड, मतलब समझे योर, सो इट्स फॉर यू टू बिल्ड मसल, उसका एक रेंज होता है जो जो साइंस बेस्ड थियरी से प्रूव्ड है कि 1.6 to 2 ग्राम्स आपने पर केजी के हिसाब से, पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है फॉर यू टू ग्रो मसल. Yeah. अब ये है ग्रोइंग मसल की. इफ यूर अ नॉर्मल पर्सन हु इज जस्ट लुकिंग टू ईट हेल्दी, आपको नहीं चाहिए इतना ज्यादा प्रोटीन आपकी डाइट में. एंड but फिर भी you probably need 100 grams of protein, and you, most people don't get it through like their normal food sources. तो इसीलिए But it is recommended doable. But it is doable. 100 is very doable. It's not It's like it's doable not. because I think Yeah, my target is 250 grams protein a day or something. So that is a challenge. It's a lot of people are, it's difficult. It's not difficult because yeah. difficult is 250 grams of protein a day, man. You get a hardly 25 grams from a whole chicken, like a quarter chicken. You get like about 23 grams of chicken protein. So it's tough, man. How much of chicken am I supposed to eat a day? But again, वो that's another discussion. मतलब आप वही समझो ना, 250 ग्राम्स आपको हिट करना है. प्रोटीन के एक स्कूप में तो सिर्फ 25 ग्राम्स है, आपको Yeah. फिर भी 25 ग्राम्स थ्रू नेचुरल फूड्स तो कंज्यूम करना ही है. तो पॉइंट भी बताने का मकसद ये है कि प्रोटीन पाउडर लेने से आपकी बॉडी नहीं बन सकती है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. इट इज नहीं जस्ट अ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट? बिकॉज इट सप्लीमेंट्स योर डाइट. इट इज नॉट द डाइट. इफ इट वाज अ डाइट दे वुड हैव कॉल्ड इट डाइट. They call it supplement. सही. It supplements your diet is all. So I'm glad that we talked about it as well. कि यार ये these myths need to be broken. It's important that we put this information out there. And maybe in the next one we might touch upon the PEDs part of things, the performance enhancement drugs part of things, because वो भी important है यार उसके बारे में भी. So अभी हमने इतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है, but maybe we will be able to later on because अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड इंडिया से, आई थिंक इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में फिर भी इतना ज्यादा नहीं है. Yeah. That every 16 17-year-old kid who just joins the gym and he wants to get a body, their ustad puts them on the some sort of juice. तुम That's देखते होगे that's the आजकल whole. तो सारी. Yeah. ये हाँ, अब देख वो मसला, सारे मसला ये है ना कि जो जिम, आप समझे कोई लोकल जिम पे जाएंगे तो वहां पे एक उस्ताद होगा. आप 6 महीने से अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर लो, फुल मेहनत कर लो, लेकिन नहीं बन रही, तो फिर आप उस्ताद के पास जाओगे एंड द वन थिंग इज गोना रेकमेंड यू इज गोना बी लाइक यू टेक सम जूस. आपकी 2 महीने में बन जाएगी, और बन जाती है बिकॉज स्टेरॉइड्स डू अफेक्ट यू इन अ वे लाइक दैट. और आप उस वक्त 18 के हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही इतना हाई होता है. बस वो you बट just lack बाद में when the testosterone levels will crash, impression. उस वक्त There's क्या so होगा? many benefits of just taking steroids. वो तो we're gonna touch up in detail later. But ये मेन इशू ये होता है ना कि लोग पेशेंट नहीं है इतने. लाइक लोग बोलते हैं कि यार 2 महीने में बनानी है, 3 महीने में बनानी है. And you वो at देखते least नहीं है who कि is 10 साल लगा लेते हैं, 8 साल लगा yeah, लेते you need at हैं. least 8 to 10 years of training experience before getting any sort of. Even if you want to take steroids, it is recommended for you to have at least 8 to 10 years of natural lifting experience. Yeah, कि and that मतलब you have reached your genetic potential, and you know ये that I've hit plateau. yeah, exactly. So you need to be basic. You need to be an advanced lifter for you to start using steroids. लोग यहाँ पे 2 महीने 3 महीने जिम जाते हैं और फिर बोलते हैं यार बॉडी नहीं बन रही, अब यही हमारे पास ऑप्शन रह गया और कुछ जाके स्टेरॉइड इस्तेमाल कर लेते हैं. Majority of people join gyms and just quit after a while because they have unrealistic goals. हाँ वही मसला ही है ना कि आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो कि आपकी 3-4 महीने में you're gonna come out looking like ऋतिक रोशन, और इस तरह की बॉडी के गोल्स आपके बहुत अनरियलिस्टिक है. And even Hrithik Roshan and और everybody, they are on all sorts of drugs, यार. तो वो तो सबसे ज्यादा सारी चीजें हैं उनके पास. They have everything available. even if they are on drugs, they have teams of doctors Teams. just who look after the use of their drugs. तो Yeah. समझ लो आप, they're set, उनको कोई repercussions उनको face करेंगे, but they're still gonna have teams to look after them, so they can afford to do it.
दे हैव देयर ब्लड But वर्क डन एवरी वंस इन अ व्हाइल। उनके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी हार्ट रेट को चेक किया जा रहा है हर वक्त। सब चीज, उनके hmm, न्यूट्रिशन, उनके कुक साथ में रहता है सारे वक्त, वो उनको खिला रहे हैं। यू कैन नॉट एक्चुअली गेट टू दैट लेवल, एंड अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दे वोंट टेल यू एवर दैट ये सब चीजें हैं। दे डोंट शो यू देयर टीम्स। वो तो बोलते हैं कि वी गो टू द जिम जस्ट लाइक यू एंड वी बिल्ड दिस बॉडी। सो you don't know the things that go on behind the camera. You just look at a picture in very good lighting, who's a person who's been dieting down for मतलब समझो 30 दिन से उसने अपना आपको डाइट oh, किया है और फिर वो and जाके then अपनी at the end of the day they take diuretics and everything to flush out the water from their body for the shoot. We don't know that. yeah but Have you, उससे Moise, have you seen that वो दंगल transformation of Aamir Khan? Have you seen that? हाँ मैंने देखी है वो Do you know before what he said? उससे जब पूछा तुमने क्या किया था? How did you come back to the shape that you were in? आप मोटे होने के बाद दूसरा वाला जो फेज था. Did you see the interview that he was asked? no what did he He say said I trained. He said I trained for 8 hours a day every day for आमिर 6 months. खान ने ये बोला उसने He said, और उसने अपनी ट्रेनिंग बताई, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, देखना, इट्स वेरी फनी टू वॉच फॉर पीपल yeah लाइक अस हु एक्चुअली नो के व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन। सो वो ही स्टार्ट्स ऑफ विद कि मैं पहले जाता हूँ, देयर इज अ पहाड़, मैं उस पर चढ़ता हूँ रोजाना। मुझे 2 घंटे ऊपर जाने में लगते हैं, 2 घंटे नीचे आने में लगते हैं, 4 घंटे की एक्सरसाइज है मेरी। फिर मैं 1 घंटे स्विमिंग करता हूँ, फिर 1 घंटे मैं स्विमिंग पूल के अंदर कार्डियो करता हूँ। देन आई मूव ऑन एंड आई डू, आई मीन ही जस्ट लिस्टेड आउट दीज थिंग्स लाइक random stuff, that I do this चीजें and then I play badminton. And eventually, what it comes down to is 8 hours of training a day. Bro, how are you recovering? So he's just basically covering up his steroid use and his other things just by saying that I'm doing everything that you cannot do. So if somebody asks, how do I do it? So भाई मैं ये सब करता हूँ, तुम भी बना लो, ये करता हूँ मैं तो. So that other person thinks कि अच्छा, so we cannot do it because we cannot train like this. So this is yeah just another way of hiding your truth, which is again problematic. Yeah, people look up to you. So there are millions of people who are looking up to you आपको as an inspiration ले रहे हैं and then आप इंटरव्यू में जाके ऐसी चीजें बोल रहे हो 8 hours of training a day, yeah, Moise, you cannot recover 2 hours of training a day if you वही are सोच not sleeping enough, if you're not, your diet is not on point. कोई Uh, ना एक बच्चा एज एन एग्जाम्पल भी इसको लेने की कोशिश करे और 2-2.5 घंटे भी जिम पे लगा ले वो बंदा कभी भी रिकवर नहीं कर सकेगा इतनी ट्रेनिंग के yeah. बाद और उसके लिए उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो इतना बुरा होगा और वो प्रॉब्ली उसके बाद जिंदगी में कभी जिम भी नहीं जाएगा वो बोलेगा ये मैंने क्या करा अपने साथ He might end up injuring himself. he's Uh, pro- either he's going to injure himself to a point where he can't go to the gym or he's just not going to like going to the gym so it's just not going to be a good example एक्सपीरियंस ही बुरा हो जाएगा अच्छा, Moise, are there any concluding thoughts that you have before we finish up this episode? So since it's Ramadan year, you and I both are had a hard time sitting down and do this. So maybe we'll catch up again and do another episode and yeah. cover things that we missed out today. And maybe have a even more in-depth conversation about fitness and lifestyle and everything. So do you have any concluding words today? Yeah, it was a lot of fun talking to you and talking to you about the fitness industry और जो चीजें यहाँ पे हो रही है talking about the myths और इंशाल्लाह हमने लोगों के माइंडसेट्स चेंज करने हैं and या fitness यार यार, अच्छा, मैंने ऑब्जर्व दैट पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पॉडकास्ट और इस तरह की कोई भी चीज हो नहीं रही। अगर हो रही है तो मुझे बताना, बिकॉज आई डोंट नो। there are few going on but अभी मैं देख रहा था एक बंदा है फिटनेस के अंदर ही है फाहद I think he's also doing podcasts उसका नाम अच्छा, yeah भेजना मुझे, आई वुड लव टू सी दैट, बिकॉज yeah यहाँ पे ना लोकली मैंने देखा नहीं। बाहर तो बहुत few डिस्कशन people होती हैं। सॉरी, बस दैट। yeah that's the thing बाहर पॉडकास्ट कल्चर बहुत है बाहर सिट डाउन यहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन भी आप देखो ना अगर आप इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ टिकटॉक कंटेंट दैट गोज अराउंड हियर आपको समझ आ जाएगा कि लोगों का अटेंशन स्पैन किस चीज पे है यू नो सो देम लिसनिंग टू अ सिट डाउन कॉन्वर्जेशन जिसके बारे में हम ग्रोथ के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात लोग नहीं बैठ के सुनेंगे हमें 1-1.5 घंटा बात करते हुए मैंने सिर्फ एक शो देखा है इतने लंबे अरसे में। देयर इज दिस लेडी नुसरत हिदायतुल्लाह, यू नो हर?
Yeah, So she is considered as a fitness icon here. क्योंकि पाकिस्तान में there are not too many ladies who are to that athletic level because yeah, she has been maintaining a very low body fat percentage for a longest time. My wife has been training. She trained with her back in the day. So she was at Atmosphere. Reminds me of it. She did some shoots at Atmosphere as well. So she did one podcast with Ali Gulpir. अली गुलपीर का कोई पॉडकास्ट है वहां पे उसने किया था तो मैं जिम में ही मैं ट्रेडमिल करते करते मैंने एक दिन वो इंटरव्यू सुना था उसका इट वाज वेरी इंसाइटफुल लेकिन उसके नीचे yeah, जो कमेंट्स आ रहे थे ना वो देख के मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो रहा है यार ये तो कोई करने की भी कोशिश कर रहा है तो वो जो बता रही है चीजें लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रही हो आप तो ये नहीं करती होगी वो नहीं करती होगी और आप कह रहे हो कि ये हम एवोकाडो खा लो या ब्रोकली हम कहाँ से लेकर आए अरे भाई तो they are just telling giving you the information doesn't mean कि यार तुमको करना है you just see the options that are available for you आपको हर बंदे का एक अलग पर्सपेक्टिव शी इज गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन शी इज सेइंग कि यार वाइट ब्रेड नहीं खाओ अल्टरनेट बता रही है वो या कुछ बता रही है सो हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमें अपने अलावा कोई दूसरा बंदा सही नहीं लग रहा हमें लग रहा है हमें ही सब मालूम है वही ना आपको you have to let नॉलेज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट भी तो करना है ना आपने कि चलो अगर कोई सामने वाला बंदा बताए तो उसने अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं ना लाइक वो उधर बैठा हुआ है तो किसी वजह से बैठा हुआ है वो एंड इट्स ही देयर प्रोफेशन एग्जैक्टली they've been doing it for years they're probably right whatever they're saying मतलब unless it's not science backed हाँ ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट साइंस बैक देन और बहुत सारे yeah लोग बताते हैं उल्टी सीधी चीजें भी आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आप बताते देखो बिल्कुल प्रॉपर लाइक दे हैव अ प्रॉपर सेटअप होता है लोग अच्छे लग रहे होते हैं और फिर वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं लाइक मिसगाइडिंग लाइक अच्छा मोइज मिलियंस डू यू नो दिस गाय व्हाट्स हिज नेम क्या नाम है यार उस बंदे का who is the biggest fake natty and he keeps on telling that he has never taken anything and he just works आप out लिवर लिवर किंग की तो बात नहीं कर रहे हो किसकी लिवर liver किंग king no no not liver king तो just came about ना ही केम आउट ना uh, एक सेकेंड मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें या माइको हर्न याद आ गया मुझे डू यू नो या माइको हर्न या उसके he's been उसको carrying बताना those 8 packs या for the last 30 50 40 years since I was a kid he used to be ही on the magazine covers प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लाइक ही कम्पीट्स I think not anymore देखो ना but he did ही compete for many years and then he's talking about him being natural तुम he कैनी के would हो go के वो देखते हो नेटी और that नॉट या मैं देखता हूँ ग्रेग डुसेट को देखता था मैं एक टाइम पे बहुत अब यार उसकी वीडियोस बहुत अच्छी है यार उसके uh, रैंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं yeah screaming on top of his lungs अच्छा बिफोर वी जस्ट फिनिश ऑफ यार मुझे तुमसे पूछना था मुइस व्हाट इज योर इन रमजान व्हाट इज योर ट्रेनिंग लुक लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक अभी और डाइट क्या कर रहे हो किस तरह से मैनेज कर रहे हो अभी फिलहाल यार क्विकली तो इफ यू कैन गिव अ so I've been trying to bulk for the past 4 or 5 months and I've been kind of successful at it 10 किलो gain कर लिया था मैंने जबरदस्त और relatively lean तो अब I'm बट just trying to रमजान व्हाट आर यू डूइंग इन रमजान जस्ट मेंटेनिंग इट फॉर नाउ बिकॉज़ यू कैन I'm पुट ऑन मसल mainly trying to maintain whatever I have I'm trying to eat in a surplus तो stimulate होगी muscle growth but नहीं होती रमजान में you don't hit your इतना calories छोटा it's सा तो very विंडो है उसमें क्या खाओगे आप एग्जैक्टली आप पूरा टाइम मतलब पे खा ही रहे होते हो इफ्तार से लेके सहरी तक आप यू जस्ट ईटिंग तो इट नहीं होता फिर वो रियलिस्टिक नहीं रहता हाउ बट मच या डू यू वे राइट नाउ सो आई एम एट 88 kilos right now 88 at what height at 6'1". you're 6'1". Yeah, Don't tell me so you I'm don't look that tall यार no I'm 6'1". So अब जो कह रहे हो ना you जबरदस्त need यार 35 to sit. So right now I need to eat 4,000 calories for me to gain weight. सही है And और ठीक है मैं हाँ मेक सेंस मेक so it's सेंस very hard to get into those calories in 8 hours. it's coming from I know it very well यार it's tough भाई it's very tough this is the क्योंकि reason why I get demotivated all the time. Currently, I'm not training. I haven't been training for a while, and the only reason I kind of took a break because I wasn't able to hit my calorie requirements.
I was having raw olive oil, the 3-4 tablespoons of raw olive oil in my protein shake because calories क्या कैसे खाऊंगा यार मैं? I was having the That's hard it. time. I was Honestly, talking to it's very difficult to get into get those calories. नहीं होता यार 4,000 I कैलोरीज कैसे खाओ यार आप? Stop. हाँ, मैंने कभी करा नहीं है, बट मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी शेक्स में 1-2 टेबल स्पून डाल दें ऑयल का. बट इट विल गिव. एक टेबल स्पून के अंदर देयर इज व्हाट 300 150 नहीं, कैलोरीज और समथिंग 120 150 और होती है. 3 120 सो कितने एक स्पून से 100 कैलोरीज नहीं चाहिए ना हमें तो 1000 कैलोरीज चाहिए एक मील में. यार अलग है ना, बट अब अगर कोई समझे स्किनी बंदा है who's हाँ इट वुड बी गुड फॉर हिम. yeah, it works out for him. मतलब उसने हाँ 200-300 इट शुड अपनी. इट शुड. हाँ ठीक है चलो यार मुइज थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आई जस्ट टेल everyone who is watching and listening right now that Muiz is doing some amazing content on Instagram. You guys should watch it. Normally आप जब you watch fitness reels on Instagram and other platforms, the kind of stuff that you see now, especially from the western side of the world, Muiz is making that kind of content. It's top notch. It's amazing. I'll try to put some of your reels. मुझे just send over some high res video clips जो तुम Instagram पे upload करते हो ना मुझे कोई reels भेजना. I will try to put it up there somewhere on the screen here so that people get to see it. Also तुम्हारा Instagram का handle भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे नीचे so that people can follow you and if they need nutrition and fitness advice they can hire you if They can. as a coach. ठीक है ना. सो Yeah. तुम्हारे इंस्टाग्राम वगैरह का हैंडल मैं डाल दूंगा सो पीपल कैन get to you and what else. I think that's all. Thank you for taking out time and everybody who listened and watched this. May you achieve your fitness goals and whoever is starting out, I hope you found some information useful, some of this information useful for your particular case and yeah, on that Get note we'll motivated sign for off. the job. Yeah. Yeah. I hope it works out for all of you. So until next time, take care. Bye, everyone.